the rules for calculating a follow function. So we have seen different types of rules which exist to calculate a follow function, and based on that particular rules, we have calculated few examples yesterday of the follow function. Few of those examples for which first function you people have calculated, we were supposed to calculate the follow of that function. And today we will continue with our LL1 parser. As I have told you earlier, there are four basic steps of constructing an LL1 parser. An LL1 parser is nothing but a variant of top-down parser, which is nothing but depicting a derivation. The entire idea of this constructing this particular parser is, as suggested, the second phase of a compiler is basically generating a parse tree and graphical representation of either a derivation or an reduction will be called as an parse tree. So this is what we have started with the entire second phase of an compiler. So we have completed few variants of bottom up. We are now today at the last variant of top down parsing. We have seen a top down parsing is also being called as an recursive descent parser. A recursive descent parser is basically can be implemented with a backtracking and no backtracking approach. And we have seen that we will be using a recursive descent parser with a no backtracking approach. We have seen a recursive descent parser with a no backtracking approach. And the second one is basically called as an LL1 parser, which also is basically a variant of a top-down parser without no backtracking. That means it is a backtracking free parser. So when we define an LL1 parser, there are four basic steps of defining or four basic steps of implementing an LL1 parser. The first basic step of implementing an LL1 parser is the given grammar into a question to you should be an right recursive grammar. Anytime the given grammar to you is a left recursive grammar, we have seen how a left recursion can be removed from the given grammar. So before you start implementing an LL1 parser, the most important point to remember is the grammar given to you should not be a left recursive grammar. So first check and convert the grammar from a left recursive grammar to a right recursive grammar. We have seen left recursion grammar, how to eliminate that also. So that is the first step of construction of an LL1 parser. The second most important step of constructing an LL1 parser is you have to construct two functions called as an first function and an follow function. Now the points to be remembered for the first and the follow function is first and follow function, the function takes only non-terminal symbols. So both first and follow takes non-terminal symbol. The output generated by both of this particular function is a string of terminal symbols. So terminal symbols which are the part of the given grammar will be the output of both first and follow. The third point to remember is whenever you are looking for a first function or whenever you are calculating a first function, you are supposed to look that particular non-terminal on the left hand side of the grammar. That means you are supposed to look for that particular non-terminal which carries that particular production. So when you do a first, you are supposed to scan the left hand side of the grammar. And the fourth important point for the first function is a lambda can be a part of a first function. Similarly, when you look at a follow function, a follow has a different rule. To calculate a follow, you are supposed to look at the right hand side of the production and look at the non-terminal, and which is a terminal that is being following that particular non-terminal. So right hand side has to be scanned for a follow function. The second point to remember is a lambda cannot be a part of a follow function. Instead of which a dollar is a part of a follow function, but you cannot randomly add dollar to any non-terminal symbol. A dollar will be a part of a follow function of the start symbol of the given grammar. So by default, given a start symbol of the given grammar and to calculate a follow of that, by default the follow of that start symbol of the given grammar will be dollar. So this is what the important points one has to be remembered. And yesterday we have seen three important formulas or three important rules to calculate a follow function. So given a non-terminal, if it is being followed by a non-terminal, then you are supposed to calculate the first of that non-terminal. If it is a terminal, then you can directly add that particular terminal. And if there nothing exists, then you are supposed to take the first of the LHS. So we have implemented all these three rules and we have solved a couple of examples yesterday. And few examples will be given as a part of your case study. Few people have posted that. I will just show you the solution of that. Just kindly go through those solution and check whether you have got a right or a wrong. Even if it is a wrong, just see whether you have got the remaining elements as correct or not. So we will start with this. This was the first example. We have already solved the first example yesterday. This was the follow set which we have calculated.
Now, this was the second example that was being done by us. So I think we have calculated the first of this example as well as the follow of this example. So both first and follow for this particular example we have calculated. This was an left recursive grammar. You have converted into an right recursive grammar, and yesterday you have calculated the first and follow. Go down to the next one. So this was the next one. Now, before coming down to this one, we come down to the previous examples because this was given later on. Yes, this was the next example that has been given to you. Yesterday we have discussed the first set of it. Today I'll show you the follow set of this. So the follow set of this particular example, is this. Please go through it. This is the follow set. Please check. This is the follow set for this particular example. This is the follow set for this particular third example. So the follow is dollar, then the follow of A is H, G and dollar, follow of B is dollar A, H and G, and follow of C is G, dollar B and H. You can get in any order. It is not necessary that कि जो order मैंने यहाँ पे लिखा है वही आना चाहिए. आपको कोई भी order आ सकता है, लेकिन point to be remember here is आपको elements ये आने चाहिए. So this is the one example. The next example was this particular example. These are the follow set. So these are the follow set. You are getting it. So follow of S is dollar. This is the formula which I have calculated. So follow of A is A comma B, and follow of B is again A comma B. So this is the follow of the next example. This is the follow of this particular example. Please validate, please check. So follow of S is dollar, follow of A is A comma B, follow of B is A comma B. Because today we are going to make a predictive parsing table. अगर first और follow गलत हुआ है तो आपका predictive parsing table will go wrong. And obviously if one goes wrong, further steps of implementing of LL1 will go wrong. So if anybody has not got this solution, please check this, write it down, this solution, please do this and check whether you are getting the same answer or not. Those who have got, they would have understood what basically the follow function is. Now, the next example was this particular example. This was the next example. The follow of this is basically this. The follow of this is the follow of, 1 minute. The follow of S is dollar, comma and close bracket. So it is dollar, comma and close bracket. Dollar, comma and close bracket. The follow of S is, again repeat, dollar, comma and close bracket. Follow of L is only close bracket. Follow of L dash is close bracket. Follow of L dash is basically follow of L, therefore it is close bracket. So this is what the follow set for this particular example. It is S is dollar, comma, close bracket, L is close bracket, and L dash is also close bracket. Please look at this solution. Basically, for this particular example, I again repeat the example yesterday which we have solved in the class. CPF class ID XY. We have calculated the first function yesterday, and today you can see the output of the follow function. So this is the output of the follow function. Is that clear? Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Those who have not solved, please do it. So this is the output of that one. So all this example output I have shown you. Shall we go ahead now today constructing the important part, that is basically constructing of an LL1 parsing table. Shall we construct the LL1 parsing table?
Yes. Is this follow set clear to you? Now, before you do this, you write down this particular example. Take the next example. Please take the next example. This is the next example. Program goes to statement. PROG. It is not the full word. PROG goes to statement. Statement is also written as STMT. Please write it down. When you look at this particular thing, if one part expression is another part, then and block. Similarly, while expression do and block. This is expression semicolon. This is term, this particular arrow and ID. This is zero question mark as one particular part and term. This is not an expression. This is a binary plus plus, which is an ID. Then is a minus and ID constant statement statements. Remember this. This is a statement and this is statements. And the last one is lambda. And the last one is epsilon or lambda. हो गया कॉपी करके? अभी ये जो एग्जाम्पल आपने कॉपी किया है, इसका आप फर्स्ट और फॉलो कैलकुलेट करोगे बाद में एज अ पार्ट ऑफ एन अनदर पार्ट ऑफ एन होमवर्क. व्हाई आई एम गिविंग यू more and more examples so that you should be able to know first and follow, because unless and until first and follow is very clear, it is becoming very difficult to implement LR parser family. Therefore, a mix of examples are being given to you. Please try to solve. We are going ahead, I am giving you more complex production so that you understand first and follow very clearly. Is that clear? Is that clear to everybody? So this you are supposed to calculate the first and follow of this more example. Now coming down to what we are going to do today is the LL1 parser. As I have told you, there are 4 basic steps of LL1 parser. We have completed successfully the 2 step. That is basically the first one is left recursive to right recursive, and the second important step is first and follow. Now today we will complete, if we have time to complete, because a long procedure. So today we will try to complete the third and the fourth step. So the third step of an LL1 predictive parsing table is the constructing of a parsing table. So after complete writing down this particular example, then give an heading as construction of predictive parsing table. 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 Now write down this particular grammar. Write down this particular grammar. आपको पहले वाला grammar लिखना है. I'll tell you now how to write the solution when they ask you to implement an LL1 parser. So write down this particular grammar. 1 minute. Copy the grammar which is without the left recursion. So you copy this particular grammar. I'll give you the problem definition so that you understand what will be the problem definition for so you copy the first grammar. वो ग्रामर कॉपी होने के बाद आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखिए. apply first you write down apply left recursion, apply left recursion if any on the above grammar. Apply left recursion if any on the above grammar. Apply left recursion if any on the above grammar. Write down point number 2. Compute first and follow. Compute first and follow. Compute first and follow. Point number 3. Construct a predictive parsing table. Construct a predictive parsing table for the above grammar.
construct a productive parsing table for the above grammar. And point number 4, using the above productive table or using the productive table, using the productive table, using the productive table and grammar, using the productive table and grammar, parse the string, using the productive table and grammar, parse the string id plus id into id, id plus id into id, id plus id into id. I again repeat, this is the grammar which you have written. The steps that, the things that need given to you to calculate is, the first is convert it into an recursive grammar or apply a left recursion on the given grammar if any. Point number 2 is compute first and follow set. Point number 3 is construct a productive parsing table. And point number 4 is using the grammar and the productive parsing table, parse the string id plus id into id. Now write down solution. Now write down solution. In the solution, write down step 1. In write down solution, write down step 1. अभी स्टेप 1 और 2 आपने कर चुके हैं, इसके लिए आप डायरेक्ट कॉपी कीजिए क्योंकि मुझे दोनों भी चाहिए, क्योंकि वैसे ही आपका प्रोडक्टिव पार्सिंग टेबल बनेगा. तो काइंडली कॉपी दिस पर्टिकुलर left right recursive grammar. Remember, when you are doing this in exam, you will be applying the rule and converting it. You directly cannot generate this output. Bear in mind, these terms you have to convert it into an proper thing. So आपने अभी ये ऑलरेडी किया है, इसके लिए मैंने आपको ये डायरेक्टली कॉपी करने के लिए बोला है. तो स्टेप नंबर 1 ऑफ द सोल्यूशन में ये कॉपी कीजिए, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे एक्चुअली अप्लाई करोगे लेफ्ट रिकर्शन फॉर्मूला और ये ग्रामर जनरेट करोगे. Is that clear? I hope everybody must have copied. Everybody has this particular example. Write down step 2 of the solution. The step 2 of the solution. Remember, this is not there here. ये नहीं है वहां पर. तो गलती से maybe while copying this has appeared. So this is how the left recursion is. Write down the step 2 of the solution. Computing first and follow. We have already computed first and follow. Please copy it once again. I know you have to reiterate it, but ये दोनों अगर सामने नहीं है, आप प्रोडक्टिव पार्सिंग टेबल नहीं बना सकते हैं. इसके लिए I'm asking you to rewrite all these things. So write down the second step of the solution, first and follow. Unless and until this is in front of you, you cannot calculate. Copy the first and the follow. Now, write down step 3 of the solution, construction of productive parsing table. Write down step 3 of the solution, construction of productive parsing table. Point number 3, ये first और follow है आपके पास, आपको सिर्फ rewrite करना है so that we are in continuity with the example. Write down step number 3. Step number 3 is construction of productive parsing table. I'll tell you how to construct this table. There is an algorithm which is being there. I will explain the algorithm to you, and then we will start constructing the productive parsing table. Now look at this particular algorithm that is being highlighted. It is a very small algorithm. We'll see how it is to be calculated. Now, step number 3 is construction of a productive parsing table. The input that is required to make this particular productive table, as you can see, is you require a grammar. So everybody has a grammar G, and everybody has first and follow. So everybody has a grammar G. Now the grammar G which we are talking out here is an right recursive grammar. So that is your step number 1. So grammar है आपके पास और first and follow है. So if you can see, to create a productive parsing table, you directly cannot jump in creating a productive parsing table. The two inputs that are required to create a productive parsing table is a right recursive grammar and first and follow. So both of them is there with you. The output that is going to be generated is a parsing table. The name given to that particular table is an M table. So we call it as the parsing table as an M table. So we will be generating a parsing table M.
Now, how to generate that parsing table in an M? There is a for loop which is being given here, which allows you to make an entries into the parsing table. Now, if you look at an for loop which is being defined here, you are supposed to take each production in the grammar. So each production in the grammar is A goes to alpha. Remember, A is on the left hand side, therefore there is a single non-terminal. Alpha can be a strings of terminals and non-terminal. So for each production, you are supposed to create an entry into the parsing table. Therefore, look at the for loop for each production. The productions can be of the form A goes to alpha. So if I take the first production, E goes to T E dash. So value of A is E and value of alpha is T E dash. So for each of this production into the given grammar, this is what we are supposed to do. Now, for each terminal A in first of alpha, you are supposed to add an entry into the column A goes to alpha. So if it is a terminal, then you are supposed to take the first of that value, and if it is a lambda symbol, then you are supposed to take the follow value and make appropriate entries into the parsing table. So add A goes to alpha, and here if each symbol B is in follow, then you are supposed to do this. So this is what the for loop is. Now, looking at this particular for loop, if any of the entries are not filled up into the table, then that entries will be considered or marked as undefined entry or an error entry. तो अभी ये जो for loop मैंने आपको बताया है, वो कैसे execute करना है वो हम देखेंगे. Now, you are supposed to start making a table. A table consists of rows and columns. As everybody know, the table consists of rows and column. So we have to see what will be the rows of the column and which will be the columns of the given table. Now start making a table. The rows of the column, the rows of the table will be all the non-terminal symbols defined into the grammar. Look at the grammar here. Look at the left recursive grammar. Tell me what is the NTs here. What are the NTs? What are the NTs into the given grammar? So the NTs of the grammar are E dash E dash, Okay. E T dash T dash, F. and the last element is F. So ये जो rows है, these are basically the NTs. So आप यहाँ पे NTs भी लिख सकते हो so that you remember that this is a non-terminal. So rows are basically NTs. Rows are basically NTs. Is that clear? Is that clear? तो बनाइए टेबल. आपको 5 रो बनाने हैं. E dash, T dash and F. बनाया. Now your columns will be or terminal symbol. So columns are basically your terminal symbol. So I write down here as terminal symbols. So all your columns are terminal symbols. You can start writing the terminal symbol. The first terminal symbol is, you can write in any order. आप मुझे बताइए, मैं आप लिखती हूँ क्या क्या टर्मिनल्स है उस ग्रामर में. Which are the which are the terminals into the given grammar? Plus multiplication. Yes. Open. Plus, Right, close. ID. plus is there. Then you have, so I take an element as first, as I take it as, you can write in any order. I take it as ID, then I take a star. Just look at this, whether these are the elements, open bracket, close bracket and plus. ये है ना बराबर, ये टर्मिनल्स है. Is that right? Okay. Now what we will do is we will add one extra terminal here, and that extra terminal is nothing but your dollar terminal. So we'll add one more because हमने क्या बोला है, follow में हम आपको ये table कैसे calculate करना है. This table is basically calculated using the first and the following
function. So using the first and the follow function, the follow का जो part है उसमें dollar है, therefore I am taking a dollar. A lambda is not a part of the given parsing table. So please mention somewhere a dollar column be created as a part of the terminal symbol into the predictive parsing table, and lambda cannot be, or absent cannot be, the part of the predictive parsing table, or lambda cannot be the part of the entry of the parsing table. Is a template or is a table clear to you? Is a table clear to everybody? Shall we start making an entries into this? We have to execute the for loop. We are supposed to execute the for loop. We are supposed to execute the for loop. Shall we start executing the for loop? Now, to execute the for loop, go to the left recursive grammar. ये grammar के पास जाइए आप. Go to the left recursive grammar. Now, the thing which I am telling you, mark it very properly. And similarly, we'll do. I cannot do it here. I cannot show because board का problem है. But I will mark it with a red color. So come down to this particular grammar. Whenever I am saying come down to the grammar, remember you are supposed to come down to the left right recursive grammar. As I've already told you, LL1 parser के लिए आपको right recursive grammar ही चाहिए. ये grammar अभी आपको भूल जाना है. Come down to the step 1 of the given solution. Now mark the elements. How to mark the elements? What you are supposed to do is you are supposed to mark the first element of each terminal symbol. So either you draw the entire group or start circling the first elements only of each of the given production. सिर्फ फर्स्ट वाला एलिमेंट आपको सर्कल करना है, सिर्फ फर्स्ट वाला. मैं उसको रेड हाईलाइट कर रही हूँ, आप उसको सर्कल कीजिए, डैश अंडरलाइन जो भी आपको करना है, whichever is the convenient way for you to identify. Please mark only the first elements. Mark only the first element. किया mark? Now, how to make an entry? The moment you have marked this particular production, we will start making an entry. ये mark किया सबने? Yes. Okay. Yes. Okay. Now your step 1 we don't want. Now we will go to the first and the follow function. Now we will go to the first and the follow function. Now look at the first and the follow function. Now the first element, look at the first production. First element क्या है? T है. What is T? T is a non-terminal symbol. The first element में T is a non-terminal symbol. So the production is E goes to E. Sorry, production of first one is E goes to T E dash. You have marked the first element. The first element here is a non-terminal symbol. So the T is equal to NT. So what the rule says is, if it is a non-terminal symbol, if that element is a non-terminal symbol, add entries, add production in the first of add production in the first of that non-terminal. If it is an NT, you are supposed to add production in the first of that non-terminal. Now what it means, E goes to T. तो आपको क्या चेक करना है? TNT है, तो आपको T का, अगर आप इसको लिख सकते हो तो you say that if it is an NT, look at the first of that NT and add production. I'm putting it in a different way. You can write it down in any way which is clear to you. If it is NT, look at the first of that NT and add production.
Now look at the first of that NT and AND production का मतलब क्या है? पहला एलिमेंट T मिला, T नॉन टर्मिनल है, तो T नॉन टर्मिनल है, T का आपको कौन सा सेट देखना है? फर्स्ट सेट देखना है. T का फर्स्ट सेट में जाइए, फर्स्ट ऑफ T का वैल्यू बताइए क्या है? फर्स्ट ऑफ T का वैल्यू, फर्स्ट ऑफ open bracket ID. open bracket and id. So open bracket and id, so you have to come down to the particular table. open bracket इधर है और id इधर है, आप उसमें वो प्रोडक्शन ऐड करोगे तो ओपन ब्रैकेट और id में प्रोडक्शन जो ऐड होगा इट विल बी e goes to t e dash, और ओपन ब्रैकेट में भी ये प्रोडक्शन ऐड होगा e goes to t e dash. So if it is a non-terminal, you are going to take the first of that non-terminal and add that production accordingly into the first element set. समझ में आया? Is that clear? Is the entry clear to everybody? Is the entry Yes, ma'am. clear? हाँ. So we move down to the next one. There are two ways of making this table. I'll just this is the first way. I will show you the second way later on. ये आप दो दूसरा बनाइए मत, मैंने सिर्फ नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए वो रखा है. नाउ कम डाउन टू द ग्रामर वंस अगेन. नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड ग्रामर का आपने क्या मार्क किया है? क्या मार्क किया है? प्लस. प्लस डायरेक्टली टर्मिनल है. Yes. If it is a terminal, then you can directly add the production. Now remember very carefully two important things to be remembered here. If it is in T, then you can directly add the given production. If it is in T, you can directly add the given production. That is rule number 2. अब जब आप ये प्रोडक्शन ऐड करोगे आपको क्या देखना है कि ये कौन से रो का चल रहा है. अभी रो है E dash. The row that is coming is an E dash row. Now E dash का पहला एलिमेंट क्या है? प्लस, विच इज अ टर्मिनल सिंबल. तो E डैश का रो में जाना है और प्लस के यहाँ पे जाना है और आपको वो सेकेंड प्रोडक्शन वहां पे ऐड करना है. तो सेकेंड प्रोडक्शन इज E dash goes to plus T E dash plus T E dash. Add the value there. Is that second entry clear to everybody? Is the second entry clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we go down to the third production. अब आप थर्ड प्रोडक्शन में देखिए, अभी थर्ड प्रोडक्शन भी E डैश से ही स्टार्ट होने वाला है. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. अगर वो E डैश से ही चालू होने वाला है तो आपके पास E डैश का एक ही रो है, आप दूसरे रो में उसको लिखिए मत. दिस इज द कॉमन मिस्टेक और अ कॉमन कंफ्यूजन पीपल student makes. They don't understand which is the row to be maintained. The row to be maintained is basically आपका जो ये सिंबल दिया है वो आपका रो है, क्योंकि नॉन टर्मिनल आपका रो है. अभी देखिए थर्ड प्रोडक्शन में फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका? लैम्बडा. अभी फर्स्ट एलिमेंट आपका थर्ड प्रोडक्शन में लैम्बडा बन चुका है और आपको ऑलरेडी बोला गया है कि लैम्बडा इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्टिव पार्सिंग टेबल. सो लैम्बडा is not the part of the predictive parsing table. That does not mean we cannot make an entry to the lambda.
that does not mean we are supposed to make an entry. You cannot skip the entry. तो जैसे ही लैम्डा आएगा आपको थर्ड रूल अप्लाई करना है कि इफ इट इज अ लैम्डा, it is a lambda symbol. I'm taking this symbol, please. This is a lambda symbol. I am taking this only for the representation purpose, otherwise I have to copy, otherwise it is better I'll copy it so that it will not create any confusion. So if you have an lambda, then you are supposed to look at the follow set, then you are supposed to look at the follow of the NT on the LHS, then you are supposed to look at the follow of an NT on the LHS. Now what this rule means is आपका थर्ड प्रोडक्शन में लैम्डा आया है, आप डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकते हैं प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल में. इसके लिए आप ई डैश का फॉलो सेट चेक करेंगे. एवरीबडी हैज एन ई डैश फॉलो सेट विद देम. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई डैश का फॉलो. ई डैश का फॉलो में क्या एंट्री है? Dollar and close bracket. Dollar and close bracket. So you will come down here, you are at E dash, you have a dollar and close bracket. Remember, this time the production which you are making this entry is E dash goes to lambda. E dash goes to lambda. So row number 3 has 3 entry for 2 different production. One is for the first one, E dash goes to plus T, and the second one is E dash goes to lambda. E dash goes to lambda. समझ में आया rule? Is the rule clear to everybody? Yes. This is how you are supposed to add into the predictive parsing table. Now I will do one more and then you will calculate the remaining entries. I will do one more for T. Come down to T. You are at the next production. T goes to F. F is a non-terminal. So you will calculate what? First of that non-terminal. So first of F क्या है? First of F is open bracket ID. So T का open bracket और ID. तो open bracket और ID में आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन कॉपी करना है. ओपन ब्रैकेट एंड आईडी. सो आई पेस्ट दिस एज हियर एंड आई पेस्ट दिस एज हियर. इज दैट करेक्ट? समझा क्यों आया वो एंट्री वहां पे? क्योंकि वो नॉन टर्मिनल था. इज दिस एंट्री क्लियर टू एवरीबडी? Is this entry clear to everybody? Ma'am, slide is not visible. Not visible? Slide is not visible. 1 minute. Is it visible now? Is it visible now? Yes, ma'am. So come down to this particular row which I have calculated just now for T. T goes to FT dash and T goes to FT dash. The first element marked was F. F is a non-terminal symbol. So you are supposed to go to the first of that non-terminal. The first of F was giving me 2 entry, ID and open bracket. Therefore, an appropriate productions is being written into ID and open bracket. Is that clear? Now, quickly, in another 2 minutes, fill up the entries for T dash and F. आपके पास बाकी के मार्क किए हुए प्रोडक्शंस बाकी है. यहाँ से यहाँ तक के प्रोडक्शंस है. क्विकली आपको इस टेबल में फिलअप करने हैं. Quickly start filling up the entries of T dash and F. We will see entries
or what went wrong while doing these entries? Quickly add 2 entries into this. Done. So let us see. The next element is T dash goes to F star dash, which is direct at terminal. So T dash ke column में, row में, T dash within star, I will directly write down the element production. T goes to FT dash. T goes to FT dash. Yes. Which is the next value. Which is the next value. Next production क्या है mark किया हुआ? T dash goes to lambda. Since it is T dash goes to lambda, I have to take a follow of T dash. Follow of T dash is plus dollar and close bracket. Plus dollar and close bracket. So I'll go down here, go down to the table. We have T, we have plus, I'll add plus dollar and close bracket, plus dollar and close bracket. So these are the entries which you get for T dash. These are the entries which is being generated for T dash. Please check. These are the entries generated for T dash. So this is the entry for T dash. Now come down to the F part, next production. The next production, the first value that is marked is directly and terminal symbol F open bracket E close bracket. So F ka open bracket mein I will paste this particular entry, or I will rather write this particular entry. So this entry is coming at the F row. This entry is coming at the F row of the given table. The last production is F goes to ID. So ID again is a terminal symbol directly. So this time I have to make an entry to the ID row, sorry, ID column. So F of ID is this particular production. So this is how the table looks like at the end. ये table बना है. This is how the table is being generated with whatever rules I have given to you. समझ में आया? Check Yes. करो. हाँ. So this is how the table is being generated. So what in short I mean to tell you is, ये जो for loop यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे देखिए for each terminal A in the first of alpha, you can directly add that particular production into the given table. So come down to the algorithm. अगर वो terminal है in for वो जो first के value में है, you can directly add that particular production into the table. Table called as M. The columns of the table are M, A and A because the rows are non-terminals and the columns are your terminal symbols. So the entry of the table is M. This is capital non-terminal and this is a terminal. So this is a row and this is a column. If it is lambda in the first of alpha, then for each of this you are supposed to calculate a follow set and then you add that particular production into this. So this for loop which is being written here is the same thing I have told you while calculating this particular table. Now the last step of the algorithm says make each undefined entry M to be an error. इसका मतलब क्या है कि जो जो entries खाली रह गए हैं वो entries error है. तो आप यहाँ पे error लिख सकते हो या तो उसको आप blank छोड़ सकते हो because they will be called as an undefined entries. So write down as either an error or you can write down as an undefined entry. There is no problem in that. Error नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, but I just wanted to show you that this is basically how the table looks like at the end. So these are basically the error entries.
Is that clear? Followed how to construct a LL1 predictive parsing table. Is that clear? Yes, ma'am. Yes. Yes. Now, the other way of constructing this table is instead of writing down the productions which you have written here, the other way of writing down is you can do in another way. You number this particular production. So you start numbering this particular production. I have numbered this production. There are 8 productions written here. So this is another way of representing, but many a time we represent into this particular format because this particular format makes it easy for parsing. But कभी कभी आपको जो पार्सिंग स्ट्रिंग दिया है वो नंबर के साथ होगा, तो आपको ये नंबर टेबल भी आप बना सकते हैं. I'll tell you how to make this number table. So first you are supposed to number the given production. So start numbering the given production. We'll look at another alternative way of making the predictive parsing table. गलत नहीं है, आप ये भी बना सकते हो या वो भी बना सकते हो, दोनों नहीं बनाना है, एक ही बनाना है, बिकॉज यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम टू डू ऑल दोस थिंग्स इन एग्जाम. तो एक ही कोई बनाओ जो भी आपको कंफर्टेबल है. But this is uncomfortable. This becomes difficult to do it, but this helps you more clearly when you do the parsing. But I am not saying only do this, you can do the other way also. So other way में करने के लिए आपको क्या करना है, अदर वे में जाने के लिए आप इन सबको प्रोडक्शंस को नंबर कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are 8 प्रोडक्शन. नाउ कमिंग डाउन हियर, आपने टी गोज टू ई डैश का नंबर क्या दिया था, तो ये प्रोडक्शन लिखने के अलावा आप इसको प्रोडक्शन नंबर लिख सकते हो. तो दिस इज वाज प्रोडक्शन नंबर 1. आई थिंक नेक्स्ट प्रोडक्शन इज प्लस वाला इज प्रोडक्शन नंबर 2. So this, where is this plus? This plus wala is production number 2. Then the next one is production number 3. Then these are production number 4. Then this is production number 5. This is production number 6 and 6. This one is production number 7 and this one is production number 8. तो आप ये टेबल ये नंबर के साथ भी बना सकते हैं. 1 refers to this table as that first production. 2 in the table refers to the second production. So this can be represented into this form. जैसे हमने ओपीएम मैट्रिक्स बनाया है और एसपीएम मैट्रिक्स. सो ये जो ओपीएम मैट्रिक्स हमारा रिलेशन था, सॉरी रिलेशन टेबल था, फिर हमने उसका फंक्शन बनाया. तो इट इज नॉट द वे एक्चुअली दैट वे, बट दिस इज हाउ यू कैन स्टोर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन नंबर. तो ये भी टेबल राइट है और ये भी टेबल राइट है. जो भी आपको कंफर्टेबल है यू कैन मेक एनी ऑफ दिस टेबल. बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, व्हाई आई हैव टोल्ड यू नंबर इज बिकॉज दिस एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन टू यू, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, जब आप ये एग्जाम्पल उस टेबल में लिखने की कोशिश करोगे तो बिकम मोर एंड मोर complex, not in terms of complexity, but more data will be there in the table and then the table will look like very crowded table. So therefore अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्शन है तो it is better to represent the table into this number format. But bear in mind ये number आपको मतलब क्या है, आपका प्रोडक्शन है. तो आप ऐसे भी टेबल बना सकते हो, आप ऐसे भी टेबल बना सकते हो. Both are equally right. Is that clear? Is the formation of the predictive parsing table clear to everybody? And 2 ways of representing that particular table. Is it? Yes, ma'am. Okay. Now we shall, what you are supposed to do. Now the supposed to do is, अभी ये जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं ये सारे एग्जाम्पल के पास आपके पास फर्स्ट और फॉलो है. आप सबके टेबल्स बनाना स्टार्ट करोगे. ये पहला एग्जाम्पल का टेबल बनाना है आपको. सेकंड एग्जाम्पल का टेबल मैंने आपको बताया है कैसे बनाना है. उसके बाद ये थर्ड एग्जाम्पल, ये जो था ये थर्ड एग्जाम्पल का टेबल है. फोर्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल
and the last example which I have given to you, the 7th one, ये इसका तो आपको पूरा कैलकुलेट करना है, इसका आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है, फॉलो कैलकुलेट करना है और प्रोडक्टिव टेबल करना है. Why I am giving you this many example is, अगर ये टेबल और ये सब आपको क्लियर नहीं है, I am again and again repeating, I am not scaring you, making of LR parser table is going to become very very complicated because उसका problems are much more complicated than this. इसके लिए please try to calculate first, follow and the table, because the LR parsing tables are also on the similar lines. So all 7-8 examples which are with you, please calculate. For this particular example which I have given you today, you are supposed to calculate first, follow and your productive parsing table. Now one point to remember here is, please tell me what will be the entities of this particular grammar. इसके entities आप मुझे बताएंगे? Can anybody tell me what will be the entities of this given grammar? Program, the entity is statement and another entity, then expression is another entity. I'm not doing anything, I'm just taking this particular side. ये जो दिया है इसका पहला प्रोग्राम है, नेक्स्ट का स्टेटमेंट है, नेक्स्ट के सारे एक्सप्रेशन है, नेक्स्ट का जो टर्म है, सो टर्म इज द नेक्स्ट एंटिटी, उसके बाद ब्लॉक इज द नेक्स्ट एंटिटी. ये मैंने आपको क्यों पूछा है, क्योंकि ये लास्ट अगर आप देखोगे तो लास्ट का एंटिटी है STMTS. सो डू नॉट कंफ्यूज कि ये STMT हमने ऑलरेडी ऐड किया है तो हम और एक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दिस टाइम द वैल्यू इज STMTS. therefore this example is given to you. तो ये दो अलग अलग नॉन टर्मिनल है, समझ में आए? नॉन टर्मिनल आपको ज्यादा यूज कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड देखना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा है वो नॉन टर्मिनल्स है. समझ में आया? तो आई हैव जस्ट टेकन प्रोग्राम, स्टेटमेंट के देयर वर 3, सो आई हैव टेकन ओनली 1. एक्सप्रेशन के देयर वर कपल ऑफ देम, आई हैव टेकन ओनली 1. टर्म के देयर वर 2, आई हैव टेकन 1. ब्लॉक के देयर वर 2, आई हैव टेकन 1. and this is STMTS. Therefore I have taken that particular thing. So this non-terminal is different from this non-terminal. So I have given you that particular hint also. Please calculate the first, follow and tables for all the examples which we have solved so far. Is that clear? Now you know how to make a productive parsing table. Ma'am, हाँ बोलिए. ma'am, in right hand side, then how we can identify the this non-terminal and terminal? हाँ, तो ये अगर नॉन टर्मिनल बचा है, गया है, तो बाकी के इसमें ये छोड़ के सब टर्मिनल्स बन जाएंगे. समझ में आया? तो ये नॉन टर्मिनल के सेट में चला गया है ना. अच्छा, okay. It is minus that set. So minus this set is your terminal set. So terminal के values, if you want, we can calculate. First statement है, statement already non terminal बन चुका है, तो इसमें next values क्या है टर्मिनल के? टर्मिनल का next value है if, correct? Expression yes. उसमें चला गया है, तो next value क्या है टर्मिनल का? Then. Do you agree? Okay, understand. हाँ, तो वो simple है. इसका next value क्या बना? Then. If you want, we can calculate. Next is while, then next is do, क्योंकि block और expression चला गया है. Next is semicolon, don't forget that. Next is semicolon. Next is this particular symbol. Next is ID. Next is 0 question mark. Then next is not. Then next is plus. उसके बाद है माइनस. समझ में आया ना? Yes. ID already I have written, so I am not taking ID once again. Then the next element is constant. Then the next element is open bracket. The next element is close bracket. Please bear in mind. And the last element is एप्सिलॉन. तो ये सब आपके टर्मिनल्स बन गए. ये आपका टर्मिनल सेट है.
Now ये वाला उससे कंफ्यूज मत कीजिए, ये अलग अलग है एंट्रीज, ये इसका सिर्फ एंड ब्रैकेट है। तो ये सब आपके टर्मिनल्स है। इज दैट क्लियर? Okay, yes. तो नाउ यू कैन कैलकुलेट। नाउ आपके पास नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल है, समझ में आया? अगर आपके पास ऐसा कुछ ग्रामर है तो डोंट गेट कंफ्यूज। पहले आपको एलएचएस में जितने भी टर्म दिखेंगे वो सब आपके एंटीज बनेंगे, तो आप एंटीज डायरेक्टली लिख लीजिए और फिर वो एंटीज माइनस आपके जो बाकी के एलिमेंट्स बचे हैं वो आपका टर्मिनल सेट बनेगा। इज दैट क्लियर? Yes. So I have given you more close to the solutions. आपके पास एंटीज और टीज ऑलरेडी है। आपको इस ग्रामर को, ये ग्रामर बेसिकली इज नॉट अ लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। डू यू अग्री? आपको फर्स्ट एलिमेंट देखना है, प्रोग्राम है, यहाँ पे स्टेटमेंट है, इफ है, स्टेटमेंट वाइल, स्टेटमेंट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन टर्म, एक्सप्रेशन इज जीरो, एक्सप्रेशन नॉट, प्लस प्लस माइनस। सो दिस ग्रामर इज नॉट अ लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, इट इज ऑलरेडी अ राइट रिकर्सिव ग्रामर। तो आपको वो भी स्टेप इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको अभी इसका सिर्फ फर्स्ट फॉलो और टेबल बनाना है। तो ये जो ग्रामर है इसका टेबल आप नंबर से भी बना सकते हो, क्योंकि the entries will become very difficult to write down, it will become more congested। इसके लिए ये फॉर्मूला से भी आप और ये मेथड से भी बना सकते हो। सिमिलरली ये जो ग्रामर है जो हमने कल किया था क्लास के अंदर सॉल्व, ये ग्रामर भी आपके टेबल में 1 2 3 के एंट्रीज लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरा वर्ड लिखने के लिए टेबल आपका बहुत बड़ा बन जाएगा, मतलब कॉलम और विड्थ उसका बढ़ जाएगा। तो आप नंबर भी लिख सकते हो, बट दैट आई लीव इट टू यू, वट एवर ऑप्शन इज मोर क्लियर टू यू और वट एवर थिंग इज मोर सुटेबल टू। इज द एंटायर थिंग क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Now we go down to the most important part, which is called as LL1 parsing. So write down step 4 of the solution, LL1 parsing. Write down the next important part, LL1 parsing. Now LL1 parsing करने के लिए ये टेबल को हमको अभी जरा सम अप करना है। ये टेबल को सम अप करने के बाद, कंक्लूड करने के बाद ही आप LL1 पार कर सकते हो। सो लुक एट दिस टेबल आई हैव हाइलाइटेड हियर purposely, I have taken this particular image so that you understand। ये इमेज कॉपी है, ये टेबल यहाँ पे जनरेट किया, ये इमेज इसके लिए लिया था ताकि आप समझ में आए। रेड इंडिकेट्स योर एरर स्टेट्स, ब्लू इंडिकेट्स योर फिलअप एंट्रीज। सो अगर इसका पार्सिंग आपको करना है तो आपको ये टेबल को सम अप करना है। ये टेबल को सम अप करने के लिए you can parse the given string if the grammar becomes an LL1 grammar। Starting में only I told you that whenever you are doing a recursive descent parser, the grammar should be, if you remember, आपको मैंने क्या बोला था, जैसे ही प्रिडक्टिव पार्सर हमने स्टार्ट किया, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर हो या LL1 हो, आपका ग्रामर LL1 फॉर्म में होना चाहिए। अब LL1 के फॉर्म में का मतलब क्या है कि वो लेफ्ट राइट रिकर्सिव ग्रामर होना चाहिए और आपके पास उसके अंदर यू शुड बी हैविंग अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड के लुक अहेड। तो ये ग्रामर LL1 है या नहीं वो डिसाइड कौन करेगा? ये आपका पार्सिंग टेबल विल डिसाइड वेदर द ग्रामर इज एन LL1। अगर ग्रामर LL1 नहीं है तो आपका स्टेप 4 नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप प्रिडक्टिव पार्सिंग नहीं कर सकते हो। नाउ हाउ टू डू इट? टू सम अप दिस पर्टिकुलर टेबल। सो इफ यू हैव रिटन स्टेप 4 पार्सिंग, आप उसको कैंसिल कीजिए, ये टेबल को सम अप करना है। आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस। सो ये टेबल को सम अप कैसे करना है? पहले पॉइंट लिखना है, ईच एंट्री कंटेन सिंगल प्रोडक्शन। टेबल में देखिए, each entry is consisting of single production। So first output of this particular table you will write down each entry contains single production। Second output you will write down as empty entries corresponds to error state। Empty entries correspond to error state। And point number 3, which is most important point, each entry occupy a unique location। Each entry occupies a unique location into the given table
each entry occupies an unique location into the given table, and therefore the given grammar is an LL1 grammar. Therefore the given grammar is an LL1 grammar. Therefore the given grammar is an LL1 grammar. अब पॉइंट नंबर 4 आपको लिखना नहीं है, लेकिन आप कहीं तो सॉल्यूशन में मत लिखिए, लेकिन कहीं तो और लिख के रखिए टेबल के बाजू में. इफ देर आर मल्टीपल प्रोडक्शन in the same row, then the grammar is not an LL1 grammar. Then the grammar is not an LL1 grammar. Then the grammar is not an LL1 grammar. What it means, जैसे मैंने आपको OPM और SPM का बताया था, हर एक एंट्री इस टेबल में एक ही प्रोडक्शन कैरी कर रहा है. अगर हर एक एंट्री एक ही प्रोडक्शन कैरी कर रहा है तो देन इट इज कॉल्ड एज एन LL1 ग्रामर. लेकिन अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में अगर आपको ये ऐसे एंट्रीज आए, फॉर एग्जाम्पल आ भी सकते हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा. अगर ये ऐसे एंट्रीज आपको मिले एक ही रो के अंदर या एक ही कॉलम के अंदर, then that will be considered as not an LL1 grammar. So any two production occupy the same entry, the grammar will be called as not an LL1 grammar. Each row should occupy a single entry. So अगर ग्रामर LL1 ग्रामर है तो you can implement step 4, और अगर आपका ग्रामर is not an LL1 grammar, then step 4 cannot be implemented. I again repeat, each entry should be a unique entry. There should not be two entries into the given row or a column. अगर ऐसा केस आपको मिलता है, then the grammar becomes not an LL1 grammar, and then you cannot parse the given string. Is that clear? Yes. हाँ, तो आपको जब आप ये टेबल्स बनाएंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, आप टेबल को सम अप करोगे. आपको ये 3 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है वेदर द ग्रामर इज एन LL1 ग्रामर और नॉट एन LL1 ग्रामर. सिर्फ ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, इसके लिए मैंने आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने के लिए बोले. आपको सिर्फ लिखना है कि द गिवन ग्रामर इज एन नॉट एन LL1 ग्रामर. रीजन भी लिखना है, क्योंकि मेनी अ टाइम्स दे विल आस्क यू जस्टिफाई व्हाई इट इज नॉट एन LL1 grammar. So the justification is that two entries or two productions occupy the same location in the table, therefore it is not an LL1 grammar. And if you want to justify why it is an LL1 grammar, then all the entries into the given table occupies an unique location, and therefore it is an LL1 grammar. So many a time they will ask you have to justify why it is an LL1 or not an LL1. Is the idea clear? समझ में आया? Yes. अब another type of asking a question to you people will be, आपको ग्रामर दिया गया है और आपको वो पूछेंगे कि जस्टिफाई वेदर द ग्रामर इज एन LL1 ग्रामर. सिर्फ इतना ही लिखा होगा. अगर इतना ही लिखा है तो आपको पता है कि जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए. आपको वो ग्रामर राइट रिकर्सिव फॉर्म में चाहिए, आपको फर्स्ट और फॉलो कैलकुलेट करना है, और आपको प्रोडक्टिव पार्सिंग टेबल कैलकुलेट करना है. ये एग्जाम्पल में मैंने आपको एक्सप्लिसिटली बोले हैं 4 पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए. लेकिन अगर नहीं पूछा है और अगर आपको बोला गया है कि सिर्फ LL1 बताइए, तो आपको पता है कि प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल जब तक नहीं बनेगा आप LL1 उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे. तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाने के लिए ऑब्वियसली आपका ग्रामर राइट रिकर्सिव होना चाहिए और फर्स्ट और फॉलो फंक्शन आपके साथ आना चाहिए. Why I am repeating all those things is because there are different ways of asking question. So in exam, don't see this is out of syllabus or this is something which is not being done. So there are different ways of looking towards the same problem in different way of asking you. So bear all these things in mind. Yes. So now write down step 4. That is, क्योंकि grammar LL1 बन चुका है, we can parsing. We'll quickly do the parsing. This is basically called as LL1 parsing algorithm. So this is what the LL1 parsing algorithm is. So this is the algorithm. Please take a photo or whatever you can do, क्योंकि I will
instead of writing down this algorithm, we'll see the step of this algorithm. So this is the first one. Take a snapshot of this. So this is first 2, 3, 4 points. Then point number 5. Look at point number 5. Point number 5 has 3 cases. So in this particular slide, I have in case number 1. We move down to the next one. Next one is B and C. B and C are the cases of point number 5 only. Bear in mind, B or C is the cases of point number 5. फिर आपका एल्गोरिथम कंटिन्यू हुआ है पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 से. सो देयर इज अ 7 स्टेप एल्गोरिथम. ये सब जो एल्गोरिथम में जो भी लिखा है, आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट. इज दैट क्लियर? Shall we start doing the parsing? Shall we do the parsing? Now, be very careful while doing the parsing. So, step number 4, we are parsing the string. String जो आपको दिया गया है वो ID plus ID into ID है. I will come back and tell you what are the points of this algorithm, and we will see how to do the parsing. Now, I have already made a template here. To make a parsing, you have to make 3 columns. The first column is a stack column. The second is an input string, and the last column is an output. So start making 3 columns for the parsing: the stack, the input string, and the output. Start making the 3 columns: stack, input, and output. Stack, input, and output. Stack, input, string, and output. Input, string, and output. Now, the first thing which you are supposed to do, we have to come down to the algorithm. We'll see the algorithm. A productive parser has an input, a stack, a parsing table, and an output. तो आपके पास stack आपने generate किया है, आपके पास output है, और आपके पास parsing table भी है. तो parsing करने के लिए आपको stack चाहिए, parsing table चाहिए, और एक output की जरूरत है. वो output क्या है? I'll tell you. Output is nothing but your productions. So productions are nothing but called as an output. Now, point number 2. The input contains a sequence of grammar symbol preceded by $, the bottom of the stack. Look at the point number 2. The input contains a sequence of grammar symbols preceded by $, at the bottom of the stack. Come down to this particular point. So the input is nothing but consisting of the grammar symbol. Input आपको क्या दिया है? String ID plus ID into ID. So आपको लिखना है, आपका input string is a grammar symbol which is ID plus ID. जो भी दिया है आपको लिखना है. आपको यहाँ पे example में दिया है ID plus ID into ID. It should be preceded by $. It should be preceded by $. Should be preceded by $. It should be preceded by $. So I have add $, at the end of the input string. Is point number 2 clear to you? Is point number 2 clear to everybody? Is point number 2 clear to everybody? Yes, ma'am. Now, we'll come down to point number 3 of the algorithm. Initially, the stack contains the start symbol of the grammar preceded by $. Remember, the stack contains the start symbol of the grammar preceded by $. Now, what is the start symbol of this particular grammar? What is the start symbol? What is the start symbol? जो example solve कर रहे हैं उसका start symbol क्या है? E. E. So it will be preceded by, so it is $E. So stack consists of a start symbol preceded by the $. It is string is being written at the end of the $, and $, is preceded here by E. So remember this, the position of the $, very carefully. Is point number 3 of the algorithm clear? तो ये आपका point number 3 है algorithm का. Now point number 4. अभी आपको parsing table का entries देखना है. The parsing table is an 2D array. We can also say that it's an 2D array written as M goes to A. M is the name of the parsing table. A is a capital letter A, which is a row, non-terminal. Small a is a column, which are terminals. Now, where A, as I have told you, A is a non-terminal,
and small a can be a terminal or it can be a dollar symbol. So it can be a terminal क्योंकि हमने डॉलर ऐड किया है इसके अंदर, तो टेबल के अंदर, तो it can be a dollar. So this a can be either a terminal or this a can be either a dollar. So is point number 4 of the algorithm clear? तो आपके पास ऑलरेडी टेबल है जो इस फॉर्म में है, बराबर ना? हाँ हाँ, चलो नाउ वी गो डाउन टू द नेक्स्ट स्टेप, गो डाउन टू द फिफ्थ एंड द मोस्ट. पूरा पार्सर ये फिफ्थ नंबर के स्टेप के ऊपर वर्क करता है. नाउ द पार्सर इज कंट्रोल्ड बाय अ प्रोग्राम. सो देयर इज अ प्रोग्राम व्हिच इज कंट्रोलिंग दिस पार्सर. व्हाट दिस प्रोग्राम डज? The program identifies or program determines X, the symbol on the top of the stack, and the input A, the current input symbol. So ये program दो चीजें देखने वाला है, आपका X value which is the top of the symbol and the A value which is the top of the string. So the parser is going to determine two things, the top and the current input symbol. The top and the current input symbol. आ जाइए इसके अंदर. The top of the stack का वैल्यू क्या है? E. Top of the stack का वैल्यू क्या है? E. And the input string का वैल्यू क्या है? ID. So it is going to identify these two values. I again repeat. Look at point number 5. The program determines X. X का वैल्यू E है हमारे पास. The symbol on the top of the stack and A. A का वैल्यू हमारे पास ID है. The current input symbol. तो कंपेयर क्या करना है आपको? E और ID कंपेयर करना है. आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं अलग तरीके से, तो कि मैंने इसको बोल्ड किया है बिकॉज ड्रॉइंग ऑफ दिस बिकम्स डिफिकल्ट. लेट मी सी वेदर आई विल बी एबल टू ड्रॉ एंड एरो. so this is an arrow that needs to be drawn. ऐसे आप एरो भी ड्रॉ कर सकते हो E और ID के ऊपर. आप ये एरो भी ड्रॉ कर सकते हो E और ID के ऊपर, बट आई एम मेकिंग इट एज एन बोल्ड राइट नाउ. यू कैन ड्रॉ दैट पर्टिकुलर एरो. E और ID का आप कंपैरिजन का एरो ड्रॉ कर सकते हो. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Now we move down to the next part. Now these two symbols determine the action of the parser. As I've told you, point number 5 of the algorithm is very important. These are the two symbols which will determine the action. Now what are the actions that can be determined? There are three different types of actions that can be determined. If X is equal to A equal to $, then the parser is going to halt and announce the successful completion of the parsing. Now X का वैल्यू क्या है? X का वैल्यू आपका स्टैक का वैल्यू E है और A का वैल्यू क्या है? आपका इनपुट स्ट्रिंग का वैल्यू क्या है? ID है. Now is X equal to A? Is X equal to A equal to $? Tell me. X का वैल्यू क्या है? The first rule is X is equal to A equal to $. In this case, stack का वैल्यू है E, जो X का वैल्यू है E is equal to A का वैल्यू ID है is equal to $. क्या ये इक्वल है सब एक दूसरे से? है या नहीं है? है या नहीं है? नो, क्योंकि X का वैल्यू E है, A का वैल्यू ID है और $. है. अगर ये सब $. बन जाएंगे, ये सब अगर $. बन जाएंगे, दैट मीन्स E भी $. बनता है और ID भी $. बनता है, तो इट इज ID इक्वल टू ID एंड दैट इज इक्वल टू $. सो अगर ये नहीं है तो आपका एल्गोरिदम, अगर ये है तो आपको पार्सिंग स्टॉप करना है. इसका मतलब क्या है कि आपका इनपुट वैल्यू में $. बचना चाहिए, आपके स्टैक वैल्यू में $. बचना चाहिए, तभी ये पार्सिंग सक्सेसफुल होगा. तो ये जो टेबल यहाँ पे बनाया गया है, ये स्टैक में आपको एंड में $. बचना चाहिए, इनपुट में एंड में $. बचना चाहिए. सो E and ID will become $, that will be equal to $, then the parser is going to halt. Unless and until this becomes $. values, the parser is not going to halt. So point number first is saying that कि अगर वो $. बन चुके हैं तो आपको पार्सिंग हॉल्ट करना है और बताना है और अनाउंस करना है कि पार्सिंग हो चुका है, कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है. यू से दैट द स्ट्रिंग इज पार्सेबल. अभी ये कंडीशन A इज नॉट सेटिस्फाइड. मेनी अ टाइम दिस कंडीशन इज बीइंग नॉट सेटिस्फाइड. वी गो डाउन टू कंडीशन नंबर 2. X is equal to A, not equal to $.
Now, this is the case which we are trying to do here. X is equal to A, not equal to dollar. Now, look at the condition here. X is equal to A and A is not equal to dollar. समझ में आया? कंडीशन नंबर 2. तो x इज इक्वल टू ए, हमारा x भी इक्वल टू ए नहीं है और ये भी इक्वल टू ये नहीं है. सो पॉइंट नंबर 3 ऑल्सो डज नॉट सेटिस्फाई. मूव डाउन टू पॉइंट नंबर 3, दैट इज सी. नाउ व्हाट इज दिस सी पॉइंट नंबर? ई और आईडी है. आपको ई और आईडी दिया गया है. आपको क्या करना है? आपको पार्सिंग टेबल में जाना है. वो पॉइंट नंबर 3 आई विल कम बैक एंड एक्सप्लेन यू, बट यू गो टू द पार्सिंग टेबल. आपने ये एरो ड्रॉ किया होगा. प्लीज ड्रॉ द एरो सो दैट यू नो व्हाट यू आर कंपेयरिंग विथ व्हाट. ये एरो आपको ड्रॉ करना है. प्लीज ड्रॉ द एरोज so that things are very clear to you. So you are first comparing E and ID. So this is a non-terminal, this is a terminal. You have to now consult the table. Now you are supposed to consult the table. E का ID का टेबल देखो. E और ID का कॉलम देखिए आप. क्या मिला आपको E और ID में टेबल में, प्रोडक्टिव पार्सिंग टेबल में? T E dash. हाँ, आपको एक प्रोडक्शन मिला होगा. बराबर, आपको एक प्रोडक्शन मिला होगा. प्रोडक्शन Yes. क्या है? T E dash. हाँ, so production is E goes to T E dash. So in the next row you will be writing down that production as the output. आपका आउटपुट क्या जनरेट हुआ है? E और ID को जब आपने कंपेयर किया, वो दोनों भी डॉलर नहीं है. वो दोनों को भी आप कंपेयर कर, एक नॉन टर्मिनल है और एक टर्मिनल है. एक नॉन टर्मिनल है और एक टर्मिनल है. आपको टेबल में जाना है, ई और आईडी देखना है. ई और आईडी का ई इज द रो, आईडी इज द कॉलम. आपको आउटपुट क्या मिला? ई गोज टू टी ई डैश. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes ma'am. Now how to write the ID? How to write the second row? Your string remains as it is, so you will be copying your string as it is. So आपको स्ट्रिंग को कुछ चेंजेस नहीं करना है. आपका स्ट्रिंग एज इट इज आपको लिखना है. अब आपको स्टैक में क्या लिखना है? आई टेल यू. डॉलर विल ऑल्सो रिमेन एज इट इज. डॉलर को भी आपको चेंज नहीं करना है. प्लीज बेयर इन माइंड, प्लीज डू नॉट चेंज द डॉलर. प्लीज डू नॉट चेंज द डॉलर. हाँ, अब आपको चेंज क्या करना है? ये प्रोडक्शन देखिए. कम डाउन टू रूल नंबर 3. व्हाट इज रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 सेज दैट if X is a non-terminal and the program consults, so X is a non-terminal, E is a non-terminal, this is a terminal, program consults the parsing table. So all of you have consulted the parsing table M, and that M will be the production of the given grammar. So you have consulted the table and you have got the production of the given grammar. Now, what is point number 6? If Mx comma A is the given production, the parcel replaces X on the top of the stack by the reverse value. Look at here, it is UVW. The stack will be replaced by the value WVU. That means U will come at the top of the stack. What I mean by this is, after consulting this E, ये जो E है, E का value क्या है? TE dash. So UVW is the value of the given E. It has to be replaced in the reverse order in the given stack. So the value here will in the reverse order में अगर मैं इसको read करूंगी तो ये बोलेगा E dash T. E dash T. समझ में आया? इसको रिवर्स बनाने का है. Please remember, this is going in the reverse way. Is that clear? Is this step clear to everybody? Everything has to be written in a reverse order in the top of the stack. जो भी आउटपुट है उस आउटपुट को आपको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिखना है. Is that clear? Yes. Yes. Now next, top of the stack का वैल्यू क्या है? T. और इनपुट स्ट्रिंग क्या है? ID. दोनों भी डॉलर नहीं है. एक नॉन टर्मिनल है, एक टर्मिनल है. Again make a comparison. This time you make a comparison for T and ID. So I make a comparison for T and ID.
T and ID. I make a comparison of T and ID. T and ID के रो में जाना है टेबल के अंदर. T और ID के टेबल के अंदर जाना है. वैल्यू क्या है? F T dash. T goes to F T dash. तो आउटपुट क्या लिखोगे? F goes to, sorry, T goes to F T dash. T dash. तो आउटपुट कॉलम में क्या लिखोगे? T goes to F T dash. Clear? Your string remains as it is. ID plus, the string remains as it is. ID plus ID plus ID into ID dollar. ID plus ID into dollar. Come down here. स्टैक में आपके जो वैल्यूज रहने वाले हैं वो है डॉलर और ई. डॉलर को आपने कुछ नहीं किया है, टी का प्रोडक्शन लिया है. समझ में आया? ये ई डैश है. समझ में आया? आर यू गेटिंग इट? Yes. सो टी का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा? टी क्या बन जाएगा? टी क्या बन जाएगा? टी क्या बन जाएगा? आपको रिवर्स में लिखना है. टी क्या बनेगा? टी dash F. एफ. टी बन जाएगा टी डैश एफ. टी बन जाएगा टी डैश एफ. इज दैट क्लियर? अगेन स्टार्ट कंपेयरिंग द नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि आपके पास टॉप सिंबल है एफ और नेक्स्ट सिंबल है आई डी. आई स्टार्ट कंपेयरिंग द नेक्स्ट वैल्यू एफ एंड आई डी. F and ID. F and ID. What is an output for F and ID? ID. ID. So you will be writing F goes to ID. Now I'll tell you how to do it. F goes to ID. आपने प्रोडक्शन लिखा है F goes to ID. F goes to ID. String remains as it is. ID. The string remains as it is. ID plus ID into ID dollar. Come down to the stack. Stack is value is dollar remains as it is. E dash remains as it is. Remember ये E dash है, भूलना नहीं. फिर T dash भी वैसा ही रहने वाला है. और F का वैल्यू सिंगल एलिमेंट है, आप उसको उल्टा भी लिखोगे तो भी वो एक ही एलिमेंट बनेगा, तो it will remain as ID. Do you agree to this? Is this clear? Is this clear to you? Yes. हाँ. अब नेक्स्ट कंपैरिजन आपका होगा आईडी और आईडी का. नेक्स्ट कंपैरिजन आपका है आईडी और आईडी का. नेक्स्ट कंपैरिजन है आईडी और आईडी का. नाउ कैन आई से x is equal to a? Can I say x is now equal to a? अभी x इक्वल टू a हो गया है ना, बराबर ना? x इज इक्वल टू a, x का वैल्यू id आया, a का वैल्यू भी id आया, बट a इज नॉट इक्वल टू डॉलर, बराबर ना? Yes. तो id इधर भी है, id इधर भी है. अगर id और id इधर है, क्या id और id आपके टेबल में ऐसा कोई एंट्री है क्या? आपके टेबल में एंट्रीज क्या है? नॉन टर्मिनल विद टर्मिनल है. टर्मिनल टर्मिनल्स की एंट्री नहीं है आपके टेबल में, बराबर? यस? हाँ या ना? हाँ. हाँ, very good. So if that is the case, what you are supposed to do is you are supposed to now pop the element of the stack. You are supposed to pop the element of the stack. So what you are supposed to do is you will be popping the element. So the output that will be generated in the next step is, क्योंकि ID और ID का आपका टेबल नहीं है, अभी आपको आउटपुट जो जनरेट करना है is nothing but the pop function. So you are supposed to pop ID. इसको पॉप करना है आपको ID को. अगर ID को मैंने पॉप किया तो स्ट्रिंग में क्या बचा? प्लस ID इंटू ID डॉलर, प्लस ID इंटू ID डॉलर, और स्टैक में से भी पॉप हो गया ID. सो इट इज डॉलर
E dash T dash. ID is being now popped. Is this clear? So if you have a terminal, then Screen not visible. Huh? Screen is not visible. Not visible? 1 minute. Is it visible now? Yes. Yeah. So what I was discussing to you is, if it is an ID and ID, then you do not have such an entry into the table. So when it is a terminal and terminal, you are supposed to pop that terminal in the next step. So output generate किया pop ID, तो input से भी ID चला गया है और stack से भी ID चला गया है. ये step clear है सबको? Yes. Yes. Now we continue further. Up next comparison. Sorry. The next comparison is between T dash and plus. So the next comparison is between T dash and plus. T dash and plus. T dash and plus entry मिल सकता है टेबल के अंदर? मिल सकता है ना? हाँ या ना? तो T dash और plus का एंट्री क्या है? Epsilon. T dash goes to epsilon. So T dash goes to your epsilon symbol. I'll just copy the epsilon symbol. I'm copying the epsilon symbol here. अभी 3 चीजें इस टेबल में आपको याद रखनी है. पहला चीज, अगर ये नॉन टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, मतलब स्टैक का वैल्यू नॉन टर्मिनल जो हम कंपेयर कर रही हो, जितने भी एरोस आप देख रहे हैं, अगर वो एक नॉन टर्मिनल और टर्मिनल है तो आपको आपके टेबल में एंट्री मिलेंगे. अगर ये टर्मिनल है, जैसे आईडी बन गया है और आईडी बन गया है, तो ऑब्वियसली वो एंट्रीज आपको नहीं मिलेंगे, वो एंट्री आपको पॉप करना है. अब थर्ड क्राइटेरिया क्या है आपका? ये क्या बना है? टी डैश गोज टू लैम्डा. टी डैश गोज टू लैम्डा. सो योर स्ट्रिंग रिमेन्स एज स्ट्रिंग, तो आपको वैसे ही कंटिन्यू करना है, प्लस आईडी इंटू आईडी डॉलर. तो स्ट्रिंग विल रिमेन एज इट इज. यहाँ पे आपको क्या लिखना है? डॉलर, वो एलिमेंट सेम रहेंगे, डॉलर और ई डैश आपका एलिमेंट सेम रहेगा. अब टी क्या हो गया? टी डैश किससे रिप्लेस होगा? अभी ई डैश से रिप्लेस होगा. Epsilon. एप्सिलॉन से रिप्लेस होगा. करेक्ट ना? हाँ. इज एप्सिलॉन अ पार्ट ऑफ द गिवन टेबल? आपने प्रोडक्टिव पार्सिंग टेबल में एप्सिलॉन को एंट्री दिया है क्या? No. नहीं दिया है. इसके लिए आपको टी डैश को डिलीट करना है. मतलब टी डैश आपको लिखना नहीं है. यहाँ पे एप्सिलॉन लिख के कुछ फायदा होना नहीं वाला है, क्योंकि एप्सिलॉन आपके टेबल का पार्ट नहीं है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग हियर ई डैश का वैल्यू, एप्सिलॉन वैल्यू भी लिख सकते हो आप. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, but that is not required. Therefore T dash is gone now. T dash is now replaced by lambda or epsilon. That is as good as not writing it. So bear in mind. So इसके आगे कहीं पर भी आप लिखिए कि एप्सिलॉन होगा तो वो नॉन टर्मिनल चला जाएगा, और अगर टर्मिनल है तो दोनों टर्मिनल चले जाएंगे. जैसे आईडी था, इसके लिए स्टैक से भी आईडी चला गया और इनपुट स्ट्रिंग से भी चला गया. अगर लैम्डा है या एप्सिलॉन है तो सिर्फ स्टैक से नॉन टर्मिनल डिलीट करना है, या आपको नहीं लिखना है. इज दैट क्लियर? इज द स्टेप क्लियर टू यू? Yes. सो शैल वी कंटिन्यू? अब आप वापस से कंटिन्यू करो. आपका नेक्स्ट इज ई डैश इज कंपेयर्ड विथ प्लस. नेक्स्ट इज ई डैश इज कंपेयर्ड विथ प्लस. टेल मी व्हाट इज एन एंट्री फॉर ई डैश विथ प्लस? Plus T E dash. So it is E dash goes to plus T E dash. So ये आपने आउटपुट जनरेट किया है. The string remains same. Plus ID into ID dollar.
और इस बार आपको ई डैश को उल्टा लिखना है. ई डैश विल बी नाउ रिटन एज ई डैश पी और प्लस. डू यू अग्री? डू यू अग्री? ई को मैंने उल्टा लिखा है और Yes. ई डैश को. इज दैट क्लियर? Yes. So next is comparison between plus and plus. Next comparison is between plus and plus. So what will be the next comparison between plus and plus going to give you? Pop plus. What it will give you? If We I are going compare to- plus and plus, क्या आएगा output? Pop plus. Pop. Yes. So pop जाएगा output. आपके स्ट्रिंग में से प्लस निकल जाएगा. आपका स्ट्रिंग बचेगा आईडी इंटू आईडी डॉलर और आपके स्टैक में से भी प्लस चला जाएगा. सो इट विल बिकम डॉलर ई डैश एंड टी. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? I am just eliminating this so that we come down to again the start. Is that clear? Is this table clear to everybody? So shall you continue further? हाँ, अभी next आप क्या compare करोगे? T and ID. What is the value of T and ID? T and ID is T FT dash. goes to FT dash. The string remains as ID into ID dollar. The string remains as ID into ID dollar. The value of this will become dollar T dash. You have to write down T in the reverse order, so it will be T dash F. Correct? Correct? Next is F and ID. Next comparison is F and ID. So if you compare F and ID, the production is F goes to ID. So this will be ID into ID dollar, and this will be dollar E dash P dash and ID. Correct? F is now replaced by this. Now there is a comparison between ID and ID. So you are supposed to pop the ID. So the string remains star ID and dollar. And here the string is dollar E dash P dash. You have popped the element ID here. The next comparison is between P dash and star. P dash and star gives you P dash to P dash goes to star FT dash. So the string remains as it is star ID dollar. Here now the string will be replaced by P dash will be replaced by dollar E dash. P dash will be replaced by P dash F star. So next is star and star comparison. So it is pop star. So you are supposed to eliminate star. So it is ID and dollar. So it is ID and dollar. And here it is dollar E dash F. The star is to be popped. So that is being eliminated. The next comparison is F and ID. The next comparison is F and ID. I do the next comparison, F and ID. So if I compare next and ID, so what is the comparison of F and ID? ID. ID. So it is F goes to ID. So this will be ID dollar.
and this will be star T dash T dash and ID. So it will be star E dash T dash and ID. Now I compare ID and ID. So if I compare ID and ID, I'll just eliminate the above steps. Hope you people have written those steps and doing it. So next comparison is ID and ID. So the value to be popped is pop ID. The string remains is dollar here, and the string that is remaining here is, now this is the most important step, the डॉलर ई डैश और टी डैश. अब आप बोलोगे कि स्ट्रिंग डॉलर बन चुका है, आपका स्ट्रिंग डॉलर नहीं, आपका स्टैक वैल्यू भी डॉलर बनना चाहिए. नाउ देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ टी डैश एंड डॉलर. आपके पास टी डैश और डॉलर का एंट्री है स्टैक में. सो टी डैश एंड डॉलर इज नथिंग बट टी डैश गोज टू लैम्बडा. Do you agree? So there is an symbol T dash goes to lambda. T dash और dollar का entry में you have an element T dash goes to lambda. So I copy that particular element and put it here. So it is T dash goes to lambda. So if it is T dash goes to lambda, the string remains as it is, and in the stack column, your T dash will vanish. So T dash will now vanish. Is that clear? Is this step clear to everybody? Yes. Is the step clear to everybody? Yes. Now Yes, the next comparison is between E dash and dollar. So next comparison is E dash and dollar. The symbol is, the production is E dash goes to lambda again. That is epsilon. So if that is the case, dollar remains as it is, and now E dash will vanish, and you are left with only dollar. समझ में आया? अब स्टैक में भी डॉलर आया है और इनपुट स्ट्रिंग में भी डॉलर आया है. नाउ कैन आई से x इज इक्वल टू a इक्वल टू डॉलर? नाउ कैन आई से x इज इक्वल टू a इक्वल टू डॉलर? Yes. So you have to conclude at the end of the table. Hence the given string is parsable. Hence the given string is parsable. Hence the given string is parsable. समझ में आया कैसे पार्स करना है? Is the idea clear to everybody? Yes. Now couple of things further which you are supposed to do. आपको ये सेम एग्जाम्पल लेना है, सेम ग्रामर लेना है, सेम प्रिडिक्टिव टेबल लेना है. फर्स्ट फॉलो, आपने सब कुछ कैलकुलेट किया है. आप स्ट्रिंग जो पार्स करोगे इस ग्रामर के लिए, वो स्ट्रिंग लीजिए. वो स्ट्रिंग है ओपन ब्रैकेट आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी क्लोज ब्रैकेट, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी क्लोज ब्रैकेट. ये जो अभी सेम एग्जांपल लिया है, आपने स्ट्रिंग पास किया था आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी. इस बार आप स्ट्रिंग पास करोगे ओपन ब्रैकेट आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी. So this you are supposed to do. Another exam. Now take another example. This is the last example which you people have to do. आपको इस एग्जाम्पल का सब कुछ कैलकुलेट करना है. You can take a snapshot or whatever. Remember it is B expression or B term. B term goes to B term and B factor or B factor. यहाँ पे आपको ग्रामर के वैल्यूज दिए गए हैं, टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल. आपको ये सब परफॉर्म करना है. लेफ्ट रिकर्शन निकालना है, लेफ्ट फैक्टरिंग करना है, फर्स्ट और फॉलो अप्लाई करना है, एलएल पार्सिंग टेबल बनाना है. और इस बार आपको स्ट्रिंग जो दिया गया है, स्ट्रिंग पढ़िए, ट्रू और नॉट ट्रू ओपन ब्रैकेट, ट्रू एंड फॉल्स क्लोज ब्रैकेट. स्ट्रिंग, रीड द स्ट्रिंग वेरी केयरफुली. द स्ट्रिंग यू हैव टू वेरीफाई. ये जो डबल कोट्स दिया है ना, वो डबल कोट्स नहीं है. डबल कोट सिर्फ स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करने के लिए दिया है. स्ट्रिंग का नाम है ट्रू और नॉट. ट्रू इज वन वर्ड और नॉट ओपन ब्रैकेट, ट्रू एंड फॉल्स क्लोज ब्रैकेट.
आपको बताना है ये सारे एग्जाम्पल्स करके, ये जब तक एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आएंगे, it is again you must be telling madam is repeating, but this is how LR parser families will work. Is that clear? Everybody has copied this? किया copy? Yes. हाँ, few more examples I will post. ये जो tables आप बनाओगे ना, इसके examples, ये सब examples के table आप बनाओगे, इसका parsing का string I will post today or tomorrow, and you have to do with that also. That I will post on the CN group, but this right now I don't have in this slide, so that I will post. हाँ, अभी ये इतना सब क्यों दिया है? Because tomorrow you don't have a lecture, I will take, because you take a gap. Please go through all those things, and day after tomorrow, that is on 26th, we will be starting with an LR parser family. So if any time you have a problem, I either post it on CN or post it on the group. आप email भी कर सकते हो, पर ये कल का दिन आपके पास है और आज का भी है. सारे examples please verify करो. Few more examples I will post it on the CN group by today night or by tomorrow morning. Please do it. So now we will be meeting on 26th and not tomorrow. 26th at 11:30. Please do all the homework and post. You have ample of time with you. Is that clear? So thank you very much. Yes, I'll give you the PPT. I'm yet to segregate. There are so many things. Part 2 students are with a project. I have to complete their project documentation. So I'm a bit busy with that. But definitely I'll segregate and post it. Don't worry. As soon as I get a time, I will do it. The PPT is meant for you. I don't have anything to do with the PPT. Let me segregate it properly and do it. But I'll post you. Yes, so meet you on 26th. Tomorrow, please sit and do all this example. And 26th, 11:30. Thank you. We will be doing with LR parser families. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.